हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन और टू टाइम विनर लाहौर, टू टाइम लूजर हो चुकी है इस पीएसएल में। जब नहीं सिर्फ दूसरा लगातार मैच हारा है, मगर कराची माफिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत के वी फाउंड सम डायमंड इन द रफ। वेरी वेरी एक्साइटिंग इनिंग्स बाय ख्वाजा नाफे। नाम काफी अनस्वैग है, ऑल्दो इट हैज स्वैग पोटेंशियल, बट That's क्या right इनिंग potential. खेली है भाई। या उस्मान पहले से ही आई थिंक पहली एपिसोड पे ही कहते कि क्वेटा की टीम इस दफा फील्स दे रही है। That's only gotten even more feels since then. I, मैं बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अमर कि आपने ये शो शुरू नहीं करा with an analogy of how for the second time in 3 days किसी ने ट्विटर को तोड़ दिया पाकिस्तान में, लेकिन it wasn't who you think, but it was ख्वाजा नाफे. Come on, man, where's your game, यार अहमद? Come on. Yeah, I mean, क्वेटा की फील्ड्स पहले से आ रही थी, और एक जो लोग कह रहे थे कि यार थोड़ी सी जो वीकनेस है उनकी बैटिंग थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ी सी कम है बैटिंग, इट डजंट स्ट्रेच लॉन्ग इनफ, व्हिच मे स्टिल बी द केस. मगर आपके पास जैसे अगर ख्वाजा नाफे जैसे स्वैग फील्ड बॉयज हों तो फिर शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़े. मैं थोड़ी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था इस शो के लिए, बिकॉज हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना होता है ये. और जो थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी उसपे ख्वाजा नाफे ने अपनी ओन ट्विटर टाइमलाइन पे एक लगाया हुआ है अपना वीडियो, एक क्लिपिंग लगाई हुई है विद, अरे कौन सा गाना है यार वो, तू आंख मारे, आई थिंक गाना उस पे है, मगर स्लो डाउन वर्जन. एंड इट्स जस्ट अ सक्सेशन ऑफ हिज सेक्सीएस्ट मोस्ट स्वैग फिल्ड शॉट्स. तो हर शॉट वो नो लुक नो लुक नो लुक, इधर स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है तो सर ऐसे नीचे करा हुआ है, लेग पे मार रहा है तो सर ऐसे नीचे करा हुआ है. वो ऑलमोस्ट लाइक शॉट मार रहा है और सजदा कर रहा है साथ. इट्स क्रेजी. लाइक आज जो उसकी हाईलाइट जो लोग पागल हो गए थे ऑब्वियसली वाज द नो लुक फ्लिक पुल ऑफ ऑफ हारिस रऊफ. मगर नो लुक जैसा डिटेल हम लोग गौर से देखते हैं ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सच अ स्वैग मूव. मुझे लगा कि उसने थोड़ी सी एक नजर देखी, बिकॉज आफ्टर ऑल आप हारिस रऊफ को एक चपेड़ मार रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको श्योर भी होना होता है. थोड़ी सी उसने ऐसी लुक दी और फिर वापस ऐसे नीचे आ गया कि नहीं मैं नहीं देख रहा था, मैं नहीं देख रहा था. आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपको, आप कौन है? हारिस रऊफ 147 की पेस से बाय. तो यानी बहुत ज्यादा स्वैग फील्ड थी. और ये मुझे हमेशा याद आता है कि दिस इज अगेन दैट टाइम ऑफ द ईयर वेयर यू जस्ट लाइक यू बबल अप विद क्रेजी अमाउंट्स ऑफ होप अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट, जो जो कि फिर अगले एक साल में आपका डिफ्लेट होता है आहिस्ते आहिस्ते. और फिर अगला साल पीएसएल फिर से आता है, फिर आप हो जाते हैं कि यार ये देखो प्लेयर कौन आ गया, और आप ख्वाजा नाफे के बारे में भूल चुके नहीं, आई थिंक वैसे ये अगर आप बट्टा फास्ट देखते आ रहे हैं तो आपको पता है हमारा पुराना रोना धोना है। मगर मेरे ख्याल में जो व्हाट यू जस्ट पॉइंटिंग आउट, जो बाकी पूरा साल है उसमें उम्मीद जाने की वजह ऑब्वियसली आपके हफीज और ऐसे किस्म के जका अशरफ टाइप किरदार है, बट ऑल्सो के क्रिकेट के अपने भी कितने वही है कि अपनी कितने मसाइल हैं कि अब पाकिस्तान कब तक टेस्ट नहीं खेलेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सो आज का दिन नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि ख्वाजा नाफे राइट, लाइक अभी कराची का मुस्तकबिल अगर आप देखें कि आपके पास साइम भी आ रहा है, सऊद भी आ रहा है, ये नाफे भी चल रहा है, लाइक खान. मतलब कि आजम खान है, लाइक सईद अनवर से लेकर इतने अरसे तक जो स्टाइलिश प्लेयर था वो तो आ ही नहीं रहा था, बट इवन कोई कराची सुपरस्टार भी बैटिंग के तौर पे, मतलब यूनुस खान प्रॉब्ली द बेस्ट कराची आप बैट्समैन इन असद दिस एरा. शफीक को, असद शफीक. Awad Shafiq, sure, Afridi was obviously Karachi's favorite, but you can't really call him a batter. And then suddenly एक साथ ये तीन आए हैं. और जो दूसरी बात, just to take it away, because obviously everyone's discussing Nafe, but जो मेरे लिए आज था, before he even came out to bat, I was like, man, ये innings है जो मुझे PSL का मजा आता है, which was Jahandad. Because वो लिटरली मतलब और हमारी कमेंट्स में अभी से ही आ चुका है कि हम लोग की रिसर्च बेहतर करनी है, सो आई अपोलोजाइज. आई डिडंट नो जैक अबाउट दिस गाय, एंड ही कम्स इन एंड आई थिंक लाइक उस वक्त कमेंट्री पे भी कह रहे थे, हमारे ग्रुप पे भी कहते कि भाई इसको प्रमोट कर रहे हो, पीछे ये है वो है फलाना ढिमकाना. एंड द गाय हिट्स लाइक व्हाट 17 बॉल 48 or something like that, and मतलब क्लीन हिट्स.
who knows whether he plays even another PSL game, let alone plays for Pakistan. And वो ये कि plays for Pakistan एक sort of, it's like almost like a death sentence, right? Like it's just, it's, I'd rather कि पूरे साल ही PSL होती रहती. Very seriously, like maybe it could have all three formats, but I would rather watch this system continue rather than अब ये उस Yeah. मीट ग्राइंडर में जाएं और तबाह हो जाएं. But No, खैर एक पॉइंट चीज, ये है कि नहीं, go on, go on. You make your yeah, I point and was then like, I'll. that this guy, like वो हम लोग मोहम्मद असगर की उस दिन बात करते, like you don't necessarily need कि अगला superstar आ जाए for to enjoy PSL. What I love is some random dude shows up Yeah. and hits out. And on top of that कि फिर आपके पास यही कि एक लड़का जो फेसबुक से उसको T20 लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फेसबुक से, that's wild. वहां से उसने क्लब खेला है, उसके बाद PSL में आ गया है, और शाहीन और हारिस रऊफ को confidently marla. Like I think that obviously is like, okay, that's like genuine hope and whatever. But I like the low stakes nature of a Jahandad thing. Like he's an all rounder, so you're not even expecting कि ये test खेलेगा, ये खेलेगा, वो खेलेगा. ये आया है, उसने shorting खेली है. That's it. That was, I love that. I think that's Yeah, what I love about it. ये कभी होगा नहीं, but like fandom को all across the world, not just in Pakistan, but you just have to be happy and satisfied कि आपने एक चीज ऐसी देखी और आप बस खुश हो गए उस पे. यू डोंट नीड टू यार कि अब ख्वाजा नाफे पाकिस्तान के लिए कब खेलेगा, क्यों नहीं खेल रहा है, और जहांदाद खान को भी यार ऑलराउंडर की एक जरूरत है पाकिस्तान को, उसे भी खिलाओ हर फॉर्मेट. नहीं यार, सबके सबकी किस्मत में नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलना, और सब चाहते भी नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलना. हारिस रऊफ being one example who didn't want to play test matches, but there are other ways to make your career now. There are other ways to give pleasure to millions of fans. तो आज जहांदाद खान, इनफैक्ट जहांदाद के बारे में इसी मैच के दौरान हम लोग हसन से बात कर रहे थे. हसन से पूछा तो हसन कहता है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आपने अपनी टीम्स जो एक्सपैंड करी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट. लोग गालियां बक रहे थे कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट फिर से वही ब्लोटेड टूर्नामेंट आ रहा है, कायदे आजम में इतनी टीम्स होंगी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में इतनी टीम होंगी, लेकिन उससे पूल खुलता है आपका. ग्लिच हैपेंड, आप एक पूल खुल गया, उसमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो आ गया. ख्वाजा नाफे इज अ वेरी unusual route to where he's gotten to, but also like actually not that unusual. It makes sense कि भाई एक बंदा है जो क्लब क्रिकेट में बहुत बहुत परफॉर्मेंसेस दे रहा है, आजकल किसी ने उसकी वीडियो क्लिप्स बना के लगा दी ऑनलाइन, कश्मीर प्रीमियर लीग में उसने रन आई थिंक बनाए थे, एंड देन दीज वीडियोस, नॉट लीस्ट हिज ओन वीडियो दैट he's put up on his own timeline. Like अगर आप उस वीडियो को देखें ना, it's pure art. It is pure art to watch that video because they've enhanced the sound of the shots. तो बल्ले पे जब बॉल आती है उसका साउंड enhance हो गया है, और फिर हर शॉट उसका नो लुक शॉट है, तो you cannot help but look sexy. So that route, then he got like to be signed up by the Chattogram Challengers in the BPL before. That's the wild part of this, that he had Yeah. not played any real high stakes representative game in Pakistan before, like now, or before the other day when he was playing. So it's okay. It's low stakes stuff. We enjoyed it. आज बहुत मजा करा, and I can confidently say कि अगर ख्वाजा नाफे इस सीजन और रन नहीं बनाएगा, I will still at least remember this innings, and I'll remember that I watched this innings and I really enjoyed it. Same with Jahandad Khan. Jahandad Khan bowling में he wasn't up to much, although he's like a solid bowler more or less, and he's like a slogger as a batter, but he's a more solid bowler. He didn't do that much, but it's fine because we got to see him for like half an hour belt the ball around, 43 of 17, which reminded me of Shoaib Akhtar's famous World Cup 43 of 18 or whatever it was against England. And that's that. But yeah, I think we should also talk more about both the sides. And I don't know if you saw, and I'll tee this up for you, I guess, कि पता नहीं कब ये कमेंट आकिब जावेद ने करी थी सऊद शकील को, कि 5 फुट 6 इंच के, इतने इतने बाजू, इतनी इतनी टांगे, ये क्या पावर हिटिंग, वो हाइनरिक क्लासन से कंपेयर कर रहे थे. और आज आई थिंक एक सऊद शकील ने एक बड़ा तमीजदार किस्म का जवाब आकिब जावेद के बॉडी पार्ट्स को दे दिया. I mean, I feel आकिब जावेद काफी सालों से ऐसी चीजें करता आ रहा है कि मतलब आई वांट टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस ऑन हिम. लाइक मुझे याद है एक दफा जब ये इनकी तीसरी दफा टीम लास्ट आई थी, और उन्होंने खुद ही वीडियो निकाली वेयर वन ऑफ द राणा ब्रदर्स इज इंटरव्यूइंग हिम, नो समवन एल्स इज इंटरव्यूइंग हिम, एंड ही इज लाइक आप फिर से लास्ट आ गए, और कह रहे हैं हाँ जी. एंड लाइक
it was just like यार हद है बेगैरती की, हद है privilege की, like कि आकिब जावेद dude. And there is like okay, there's a sense of like okay, I मुझे कोई फिक्र नहीं है ये वो, but ये actively जो ये टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए बाबे बैठे हुए हैं, क्योंकि वही एज यू पॉइंटेड आउट, जब वो बोल रहा होता है तो उसी के साथ एक अपना टॉक्सिसिटी का दर्शन देने रमीज राजा भी उसी उसमें मौजूद थे, बट लाइक यू नो वेदर ही डिड नथिंग रॉन्ग और एनीथिंग, बट स्टिल इट्स जस्ट आर दीज गाइज हेयर मैन, और इस किस्म की वो बेवकूफ बातें कर रहा था, बट आई थिंक वो बहुत जरूरी था, क्योंकि कल यही था कि आई फील जो हम बात कर रहे थे कि हनीफ मलिक जो कराची कोच है, या हम्म आज सरफराज मेंशनड नाफे का कोच who's another guy as well, ये कोचेस क्योंकि क्रिकेट को इस बेवकूफ सोच से नहीं देख रहे कि वो तगड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, तो फिर आपके रन बन रहे हैं, क्योंकि कौन से आपके लंबूतड़ों ने डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा है जो आकिब जावेद से बातें करा दो, बट आकिब जावेद को गालियां देने में टाइम हम जाया नहीं करते। ज्यादा जो कंसर्निंग बात है, वी स्पोक अबाउट द फर्स्ट गेम के लाहौर के पास राशिद खान नहीं है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है उनकी बॉलिंग में। फील्डिंग आज तो बिल्कुल तबाह हो जी चुकी थी, और आई फील पाकिस्तानी टीम्स जब फील्ड अच्छा नहीं कर रही होती हैं, दैट्स ऑलवेज लाइक अ बैरोमीटर ऑफ द ड्रेसिंग रूम हार्मनी। और शायद मैं यहाँ पे मुफ्त में तड़का लगा रहा हूँ, बट जो मेरे ख्याल में जो एक बड़ा मसला ये भी खड़ा हो रहा है कि उनकी बैटिंग, क्योंकि they were maybe 10-20 runs short in the first match. They were like 30 runs short today at least. और हाँ आपके बीच में फखर, रासी और शफीक had like 32 of 35, the three of them combined. And that this, okay, Rasim and Dewson was good in the first match, but Shafiq and Fakhr have been kind of going nowhere. Two losses is not catastrophic, but हम्म। is this like a is are we seeing Lahore not be a good team this year? यार मुझे अभी भी लगता है कि बहुत इट्स टू सून राइट नाउ टू मेक दैट Yeah, काइंड ऑफ कॉल, लेकिन उनकी जो वीकनेसेस है ना वो ठीक ठाक नजर आई हैं पहले दो मैचेस में, जो हम पहले भी वी वर थिंकिंग कि चलो राशिद खान की एब्सेंस होगी, आज थोड़ा सा दे ट्राइड टू फिल दैट होल, बट सिकंदर रजा एंड सलमान फयाज डोंट क्वाइट एड टुगेदर टू वन राशिद खान। दूसरी जो चीज कंसर्निंग है वो हारिस रऊफ का फॉर्म। आई थिंक हारिस रऊफ कई दिनों से across formats. I forget what his BBL performances were like, but I think he did okay there. लेकिन generally he's not been great. He's looked very hittable. Aj, Khwaja hit him for 2 sixes in that one over, and he's been getting like he's not been great with his bowling. I think that because उनका reliance इतनी हो गई है pace attack पे, because they haven't got that quality of spinner, because they have to then rely on Shaheen and Haris and Zaman. उनमें से अगर एक नहीं चलता है, coupled with your relatively lower strength spin department, तो then आपकी bowling फंस जाती है उसमें। तो I think I these think are things just हारिस रऊफ के बारे में ये भी मेंशन करना चाहिए कि कजाफी पे भी और वर्ल्ड कप में भी these were pitches जहाँ पे express pace was one of the most hittable kind of yeah bowling, मतलब it wasn't just him. But सही बात है कि चाहे पिच की गलती हो या उसका अपना फॉर्म हो, लाहौर really need him to be showing up, yeah क्योंकि उनके पास अब पेस ही उनके पास सबसे तजुर्बेकार बॉलर्स हैं। शाहीन जो पहले से हम बात करते आ रहे हैं, मतलब कोई लग रहा है कि वो 2 साल से सोया नहीं है, ही इज रियली been overworked to death. Um, आखिरी चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ, this ended up being maybe like significant, was that लाहौर डिसाइडेड कि हम लोग एक पार्ट टाइम कीपर के साथ खेलेंगे, और एक काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि दोनों टीमों ने आपको दोनों एक्सट्रीम्स दिखा दिए। तो एक तरफ आप या तो पार्ट टाइम कीपर लें, साहिबजादा, फरहान, और उसके बारे में मैं थोड़ी सी तफसील में बात करूंगा आगे जाके, बट ही मेक्स व्हाट 62 or 40 Hmm. 43 or something like that. But then he like drops at least one catch. He's just really unreliable behind the stumps. Versus Sarfaraz ki keeping was good. Ek, I felt he missed something, but even there, like he's generally good. But he made like 13 of 8, or didn't really go much. So तुम्हारी नजर में क्या होना चाहिए? आप would you rather go with somebody who bats better and is losing you this, because it was really I felt it was a very difficult call to make, like neither seems to Yeah, be a नहीं, good option. what T20 में
मेरी जो अपनी एक राय है वो ये है कि आपका कीपर थोड़ा सा पार्ट टाइम हो सकता है. यू कैन गेट अवे विद इट. आई थिंक बिकॉज आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स खेलना है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस वैसे ही आएंगी, वैसे ही विकेट्स आर चीपर इन T20. एक चांस आज मिस हुई है तो ऑब्वियसली वो मैग्नीफाई हो जाती है जब भी कोई कीपर ड्रॉप करता है. Yeah, लेकिन इट्स ओके. दैट डे सरफराज प्रॉब्ली ड्रॉप्ड अ कैच अर्ली ऑन, डाइव लगाई थी आमिर की बॉलिंग पे और ही डिडंट कैच इट बट क्वेटा स्टिल वन. तो आई थिंक अगर साहिबजादा फरहान का अपसाइड, आई थिंक एट द मोमेंट जिस फॉर्म में वो है, आई थिंक द अपसाइड आउटवेज हिज काइंड ऑफ कीपिंग बिहाइंड स्टंप्स. आज वो पूरी पूरी उनकी परफॉर्मेंस फील्ड में एग्जाम्पलीफाई हो गई एंड द फोकस केम ऑन साहिबजादा टू अ डिग्री. लेकिन दे वर प्रीटी बैड थ्रू आउट द yeah, मैच. Wherever yeah. they They were, were catch horrible. ball be dropping. Fakhar ka tough chance tha, but you expect Fakhar to kind of take one of those tough chances. He's still a decent enough fielder. I think कि वो चांस वैसी पकड़ ले. जमान का जो कैच ड्रॉप था शॉर्ट थर्ड पे, वो तो बहुत ही एक इजी चांस थी. तो आई थिंक वो इट काइंड ऑफ बंडल टुगेदर एंड थ्रो इन साहिबजादा फरहान. दे हेल्ड द अदर टू कैचेस, तो मे बी साहिबजादा फरहान के ड्रॉप कैच की हम बात नहीं कर रहे हो. Yeah. So I still feel कि उसका जो अपसाइड है, उसका जो बोनस है साहिबजादा फरहान का एज अ बैटर, I would still go with it. आई थिंक, और यही मैं इस पे बोलूंगा कि जो लाहौर की बिल्कुल सही बात है कि इवन दो देव लॉस्ट 2 मैचेस, देयर इज इनफ टैलेंट ऑन दिस टीम कि शायद इस सिचुएशन में आना कि अब हमें हर चीज जीतना है माइट बी अ गुड थिंग फॉर देम, बिकॉज इवन एज ए फील्डिंग आज मैं ये देख रहा था कि जमान खान ने कैच ड्रॉप किया था, बट ही इज अ प्लस फील्डर ऑन द बाउंड्री, हारिस इज अ प्लस Yeah. फील्डर, शाहीन इज अ प्लस फील्डर, दे आर a good side. That core has been together for a while. They've obviously won 2 in a row. So yeah, I think it is. It's too early to white them out. और इसलिए आखिर में साहिबजादा के बारे में ये करना चाहता है, क्योंकि अभी जब ये डोमेस्टिक सीजन चल रहा था तो ट्विटर पे धबाधब अहमद शहजाद की हिमायत में ट्वीट्स आ रही थी कि एवरीथिंग फ्रॉम लाइक whatever runs he made to like this एक वीडियो है कि जी वो पाकिस्तान की जर्सी को किस कर रहा है और फिर रो रहा है या पता नहीं क्या, फिर एक और थी कि जी वो उसने कहा मैं बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा, मुझे पाकिस्तान खेलना है, फलाना ढिमकाना. और असली बात ये थी कि उसके एक्चुअली इतने रन्स नहीं थे, उसने पहले राउंड में अगेंस्ट वीकर टीम्स बनाए थे, एंड द एक्चुअल गाय मेकिंग रन्स वाज साहिबजादा फरहान. एंड आई फील सो हैप्पी फॉर हिम दैट उसने अपना वही फॉर्म पीएसएल में भी बरकरार रखा है, क्योंकि पीएसएल में आके ठीक है अब लोग गौर से देखेंगे. डोमेस्टिक इज ऑब्वियसली किसी की गलती नहीं है, हाँ, इट्स मिस हो नॉट जाता इजीली है, अवेलेबल टू मिस हो सी जाता इट, है. बट Ahmed Shahzad came so close to letting the PR kind of win, और जिस दुनिया में हम रहते हैं वो जीत भी जाता, बट इसलिए भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि this poor guy who's making the runs, not getting any attention, not getting any call-ups, comes into the PSL, does a great job, and can win today. But I think he's been really good in both matches. And Sadat actually got closer to the Pakistan team, right? उसे कैंप में तो कॉल अप आ गया था अहमद शहजाद को. He actually ultimately got closer to the Pakistan side than Sahibzada Farhan did. Wow. But anyways, that's match 4 in the books. This is, Um, by the way, this is how viral Khwaja Nafay has gone. This is I'm wearing this t-shirt. what is that? I'm not. It's not Khwaja. It's not Khwaja Nafay doing a no look shot of a microphone. It's not. अभी से ही शर्टें बिक रही हैं. We'll be selling them Already on. done. शुरू हो गया Please ट्विटर send चेक an कर email लें. to us. But yeah, so that's it from us for this post match. जैसा कि आपको पता है हम लोग PSL के हर मैच के बाद शो कर रहे होंगे. You can watch it on our YouTube page. You can also watch it on begin.watch. I'll put the link in the description below. It's an upcoming premiere streaming OTT platform. बहुत सारा jargon एक साथ मैंने इस्तेमाल करना था. But that's it from me and Usman. Catch us again tomorrow. Till then, Khudafis.